Hey guys, how's your preparation going? It must be going well, and if not, after watching this video, surely it will. Today, in this video, we'll be exploring the second part of optics, which is of more importance and weightage than the first part. That is, wave optics and optical instrument. So without any further ado, let's hit the track. No matter how hard I try. अरे नेम बताना तो भूल ही गया. So guys, this is Abhishek back once again from Backbenchers Online and today we'll be कुछ कर लेंगे यार, टेंशन ना लो. तो guys, पता तो होगा ही आप लोगों को that this unit is of 14 marks. तो वापस से मैं आपको marks distribution नहीं बताने वाला. And if any of you want to know it, then do see the first part of this video here. So let's first talk about our first topic, which is human eye. तो इस टॉपिक को NCERT से ही आप एक बार पढ़ लो. Make sure you have practiced the diagram of eye and know the names of all the parts of eye. Moreover, power of accommodation में आप इन दो terms को, that is infinite and least distance of distinct vision को भी बस एक बार समझ लेना, because it will help you in solving problems. Now, moving on to our second topic, which is defects of human eye and its correction. So in total, there are 4 types of eye defects. First one is myopia, that is short-sightedness. Second one is hypermetropia, that is far-sightedness. Third one is presbyopia, and the last one is astigmatism. But out of it, only 2 you have to study with utmost concentration, that is myopia and hypermetropia. इन दोनों के केस में आप इमेज फॉर्मेशन पक्के से प्रैक्टिस कर लो, फर्स्ट ऑफ डिफेक्टिव आई एंड देन ऑफ करेक्टेड आई. अब इस टॉपिक से भी बेसिक न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे फार पॉइंट एक हाइपोमेट्रिक पर्सन का 75 सेंटीमीटर दे रखा है उसके आई से, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड हिम टू रीड क्लियरली बुक held at a distance of 25 centimeter from his eye. Now the second question is, a myopic person prefers to remove his spectacles while reading a book. Why? Now, moving on to the must-do topic from this unit, from which year after year, CBSE has either asked a 3-mark question or a 5-mark question, that is, optical instruments. तो इसमें आपको basically 2 types के instrument पढ़ने हैं. पहला है आपका microscope and the second one is telescope. Now, microscope is again categorized into 2 parts. First one being simple microscope and the second one is compound microscope. Make sure you have practiced the diagram of compound microscope and telescope at least 10 times and you know the end result of all 3 by heart. Having said that, you must know what all different terms like alpha, beta, nu, mu stands for and how you have arrived at the end result. तो अब देखते हैं इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक इमेज ड्रॉ करना है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. देन फर्दर वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू टेल दैट हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप चेंज व्हेन फर्स्ट द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिक्रीज्ड, सेकंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, and we have to justify our answer in each case. Now, the second question is, हमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड आईपीस का फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है. हमें ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा हुआ है एट 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब. नाउ मूविंग ऑन टू वेव ऑप्टिक्स. So let's first have a look at a comparatively easy and theoretical topic जिससे straight forward questions बनते हैं. तो सबसे पहले तो आप जो 2 assumptions है Huygens theory के वो अच्छे से पढ़ लो and then wave front and its different types, that is spherical wave front, cylindrical wave front and plane wave front. और फिर आप एक बार coherent and incoherent sources of light देख लो and how they are produced. इन टॉपिक से भी मिला के 2, 3 या कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज वेव फ्रंट. देन इट इज गिवन दैट द शेप ऑफ अ वेव फ्रंट इज एज अ प्लेन वेव एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो हमें हाइगन्स थ्योरी यूज करके ये बताना है कि हाउ द एनवेलप्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस द प्लेन वेव एट अ लैटर टाइम t. Then moreover, you have to tell
how the emergent wavefront becomes spherical and converges to the focus after passing through a convex lens. Then, in the second part, we have to verify using Huygens principle, Snell's law of refraction of a plane wave propagating from a denser medium to a rarer medium. Now, we are left with three phenomena which couldn't be explained by Newton's corpuscular theory, that is, interference, diffraction, and polarization. And all these three topics are must-do topics from wave optics. So, first one is interference. इसमें आप कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा याद कर लो, जिसमें आप फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी देख लो. फिर एक बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लो एंड रिमेंबर द रिजल्ट फॉर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एंड मिनिमा. फिर एक बार फ्रिंज विड्थ के रिजल्ट्स को भी पक्के से देख लेना. तो अब इस टॉपिक से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये बताना है कि how the interference pattern changes when first width of the slits is doubled, second separation between the slits is increased, and third screen is moved away from the plane of slits. Now the next question is, हमें दो slits दे रखे हैं in Young's double slit experiment जिनको सेपरेट कर रखा है by distance of 0.03 mm. अब जब लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम उस पे फॉल कर रही है स्लिट पे, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम स्क्रीन. हमें यह बताना है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस कितना होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक विच इज डिफ्रैक्शन. तो इसमें आप सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन देख लेना और फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पक्के से देख लो. Try to memorize the result of half width and total width of central maximum and linear width too. Now the last topic which is polarization. This is mainly theoretical and अगर इससे numericals बनते भी है ना तो बहुत basic से बनते हैं. तो आप unpolarized and plane polarized light एक बार बस read कर लो, फिर आप दो बहुत basic से law हैं और इनसे ही ज्यादातर numericals बनते हैं. दैट इज ब्रियस्टल्स लॉ एंड मैलिस लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लो. तो अब देखते हैं इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक अनपोलराइज्ड लाइट दे रखा है जिसको हमने इंसिडेंट करवाया है ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू सेपरेटिंग मीडियम. हमें कंडीशन स्टेट करनी है व्हेन द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली प्लेन पोलराइज्ड. हमें फर्दर फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ईच केस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें तीन आइडेंटिकल पोलराइज्ड शीट्स दे रखी हैं P1, P2 एंड P3, जिनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द पासिंग एक्सिस ऑफ P1. हमें एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स S दे रखा है ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 और हमें यह बताना है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट as observed by the observer at O when polarized P3 is rotated with respect to PT at an angle theta that is equal to 30 degree and 60 degree. अच्छा guys, मैं आपको एक टॉपिक तो बताना भूल ही गया, that is resolving power. You must need to go through this once and make sure you know the end result of it for microscope and telescope. So guys, this was it. And if you found this video helpful, then please give it a thumbs up. And do tell us which chapter you want us to do next. And make sure you subscribe to the 12th friendly channel, that is Backbenchers Online. And till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mother. अभी खुश क्या हो रहे हो? कुछ भी क्या करोगे? चुपचाप से जाकर इंग्लिश पढ़ो.